you know, so your coming on time and being on integrity means so much, Gaurav ji. Because Gaurav, I can't do this alone. आज तो मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था, मुझे लग रहा था हाँ, जबरदस्ती आ रही हूँ मैं। हाँ। And I was like कि पता नहीं कोई आएगा भी नहीं आएगा क्योंकि आज सैटरडे नाइट है। हुँ। So I'm very grateful. Yeah. सो अगर मन नहीं है तो आज अपने स्किप भी कर सकते हैं, नहीं इट्स नहीं योर नहीं नहीं, कोई चॉइस। skipping नहीं है. हाँ। We are not operating from feelings. We are हुँ, operating from keeping small commitments, which हुँ, we read in हुँ, chapter, yesterday's chapter, habit number 1. या। How was your chapter, habit number 1, for you? सो आई लेफ्ट इट बीच में yesterday, but you know the influence of concern, माने the thing of concern and the influence. I think it opens up your mind कि क्या चीज में हम लोग का कंट्रोल है, एंड अगर उसी पे फोकस करें देन काफी चीज को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे एंड ठीक कर पाएंगे। Yes. एंड जो चीज पे कंट्रोल नहीं है उस पे वर्क करके भी कोई सेंस नहीं है ना, बिकॉज देर इज नो कंट्रोल ऑन इट। Hmm. True. को कल the thing is, आप circle of influence and circle of concern हम्म, प्रेजेंट हो जाते हो कि कौन सी चीज कहाँ आ रही है, तो आपके हम्म, दिमाग में स्पेस, मेंटल स्पेस बढ़ने लग जाएगी. बिकॉज देन यू विल, हम्म, like, you will not allow yourself to think thoughts which are coming from the circle हम्म, of concern. यस। You will only allow your thoughts to हम्म, be from circle of influence, which हम्म, will always be actionable thoughts. हम्म, कि मैं अब ये यस। कर सकती हूँ, मैं अब ये कर सकती हूँ, अब मैं ये कर सकती हूँ. हम्म, जैसे हम्म, लाइक यू नो, इफ आई हैव सम, जैसे मेरी बॉडी में विटामिन B12 कम है, देयर इज थिंकिंग हम्म, शिट, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये वो क्यों कम है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ इसलिए नहीं होता, ये सब आप चीजें सोचोगे नहीं ना, बिकॉज दैट्स अगेन इन सर्कल ऑफ कंसर्न कि हम्म, विटामिन B12 वेजिटेरियन डाइट में नहीं होता, उसके लिए फिश खानी पड़ती है. हम्म, हम्म, डिस्ट्रैक्शन, राइट? हम्म। I know I have to think from the circle of influence. अच्छा मेरे हाथ में क्या है? Let's just take vitamin B12, का supplement. टैबलेट्स या। Yeah, हम्म, let's just start having broccoli in the diet. हम्म, So हम्म, it's very actionable approach. हम्म, हम्म, Very, very focused and action हम्म, oriented. So I think हम्म, the circle of influence and circle of concern makes you an action person. That is हम्म, proactive. यस, यस। Because then you don't have a scope of being a victim and blaming and हम्म, thinking about हम्म, stuff, हम्म, extra stuff, which will really हम्म, not impact the situation. हम्म, Let's start with habit number 2. Begin with या। the in the mind. हम्म, This is the RA magic which Rahul sir does. ओके। Result सोचो और फिर उसके ऊपर एक्शन लेंगे. एक्शन करो। हम्म, Begin with the end in the mind. हम्म, हाँ, पेंटिंग आ रही है. So we are going in private victory. Habit number 2, begin with the end in the mind. Before how we will become from dependent to independent. अपन उस हम्म, journey में. हम्म, From being an person who is dependent on the people and circumstances and others for emotional, mental, physical well-being to being independent. Number हम्म, one was being proactive, which is you will only focus on circle of influence. Number two is begin with the end in the mind. Principles of personal leadership. What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us. इसका मतलब है जो अपने पीछे निकल गया पास्ट और जो अपने आगे आने वाला है हम्म, बहुत छोटा है compared to what lies within us. विद इन अस। हम्म, Oliver Wendell Holmes. Please find a place to read these next few pages where you can be alone and uninterrupted.
Clear your mind of everything except what you will read and what I will invite you to do. Don't worry about your schedule, your business, your family, your friends. Just focus with me and really open your mind. In your mind's eye, see yourself going to the funeral of your loved one. Picture yourself driving to the funeral parlor or chapel and parking the car and getting out. As you walk inside the building, you will notice the flower, the organic organ music. You see faces of the friends, the family you pass along the way. You feel you shed the sorrow of losing, the joy of having known, and that radiates from the hearts of the people there. As you walk down the front of the room and look inside the cassette, you suddenly come face to face with yourself. This is your funeral. 3 years from today, all these people have come to honor you, to express feelings of love and appreciation for your life. आपको imagine करना है कि आप खुद के funeral में खड़े हो 3 साल बाद. Hmm. Sunita ji, welcome. We are doing habit number 2 today, which is begin with the end in the mind. As you Yes, take a yes. seat, as you take a seat and wait for the services to begin, you look at the program in your hand. There are to be 4 speakers. The first is your family, immediate and also extended, children, brothers, sister, nephews, nieces, aunts, uncles, cousins, and grandparents who have come all over the country to attend. The second speaker is of your friends, someone who can give a sense of what you were as a person. The third speaker is from your work or profession, and the fourth is from your church or some community organization where you have been involved in service. Now think deeply. What would you like each of these speakers to say about you and your life? What kind of husband, wife, father, or mother would you like their words to reflect? What kind of son or daughter or cousin? What kind of friend? What kind of working associate? What character would you like them to have seen in you? What contributions, what achievements would you want them to remember? Look carefully at the people around you. What difference would you like to have made in their lives? आप अपनी लाइफ में आपके जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों को आप जानते हो, आप क्या चाहते हो कि वो आपको किस तरह से देखे और किस चीज के लिए आपको याद रखे? Before you read further, take a few minutes to jot down your impressions. It will greatly increase your personal understanding of habit number 2. करना ही एक्सरसाइज अभी? Yes, we can do it. It will take a few Just for few minutes. minutes, yes. What do you want your wife to remember about you as a character, your children to Hmm. remember you as a character, Hmm. your parents to remember you as a character, your friends Hmm. to know you in a certain way, and your work Hmm. colleagues want to see you in a certain way? Hmm. Hmm. सुनीता जी, आप भी लिख रहे हैं? नहीं एक सेकंड, एक सेकंड ऋचा, एक सेकंड. मुझे ऋचा कुछ आइडिया ही नहीं क्या चल रहा है, मतलब. सो अभी हमने जस्ट चैप्टर शुरू किया है, विच इज हम्म, हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन द माइंड. इसमें क्या किया है, इसने बोला है कि आप 3 साल बाद अपने खुद की फ्यूनरल अटेंड कर रहे हो. हम्म, उसमें आपके सारे फैमिली मेंबर्स, वर्क कोलीग्स, फ्रेंड्स सब आए हुए हैं. अच्छा, सो यू नीड टू जॉट डाउन व्हाट डू यू वांट दे टू रिलेट टू यू. वो आपके फ्यूनरल में आके आपके बारे में क्या बोलेंगे? ये व्हाट लिखना है. कॉन्ट्रीब्यूशन, हाँ, व्हाट अचीवमेंट्स वुड यू वांट देम टू रिमेंबर? ओके. What difference would you like to have made in their lives? What character would you like them to have seen in you? आप क्या चाहते हो कि वो आपको किस तरह से याद रखे? अच्छा, ये सब लिखनी है ना बातें. हाँ. ओके. Friends, family, work, यस यस. and society extended.
सुनीता जी हो जाए तो बता देना। गौरव जी आपने किया? Yes, I've done it. Do you want me to share? Yes. So for the wife, written, the husband was a caring husband, took care of me. For the kids, I've written ki my father was a responsible father and was all and always there for us when needed. Friends के लिए कि he was a true friend. Uh, for colleagues, it was ki I was a good employer and looked at the problems of the colleagues and tried to solve them wherever possible, wherever needed. So these are the few things I've written. So I will also share. So for me, I think how my husband will relate to me is someone who was unstoppable, who was courageous, bold, and a leader. How will I want? How I see my parents remembering me as someone who made a difference in their lives, someone who really contributed in their lives and was always there as a stand for the family. How I see my friends will look at me as someone who was fun, outgoing, uh, happy and cheerful to be with, someone who was good hearted, open, and clear hearted, always shared from heart, and was fun going with to be with. And how I see my team to my work people to see me as is um, visionary. So I was very visionary. I had so much of ideas. I was a true leader as a businesswoman. And I was just, there was so much to learn from me. So that's how I see them speaking about me in my funeral. Rohit ji, welcome. So we are doing habit number 2 of Yeah. this chapter, which will take you from being dependent emotionally, mentally, socially on your circumstances and people to being independent emotionally and mentally and physically. So, habit number 2 is about uh, begin with the end in the mind. तो अभी हमने फ्यूनरल इमेजिन किया खुद का और उसमें इमेजिन किया कि फैमिली किस तरह से मुझे देखेगी, फ्रेंड्स किस तरह से मुझे देखेंगे, क्या बोलेंगे मेरे बारे में, और मेरे वर्क कोलीग्स किस तरह से मेरे लिए बोलेंगे। तो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी। सुनीता जी शेयर, आप जब तक रोहित जी सोचिए कि आपकी फैमिली आपके फ्यूनरल में क्या बोलेगी। यस और यस, आप लिखा रिचा मैंने लिखा। हाँ बताइए सुनीता जी। मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली मतलब अलग मेरे लिए अलग, ऐसे बोल रही अलग अलग, है। फ्रेंड्स एक चीज अलग, लिखी, फैमिली अलग। मतलब बहुत अच्छी इंसान थी, हेल्पिंग थी, और हमेशा ये मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं अच्छी एंड हेल्पिंग। और हम्म मेरी फैमिली मतलब हमेशा ये फैमिली के लिए खड़ी रही। हम्म और मैं हस्बैंड के लिए मैं मतलब बहुत एफिशिएंट एंड लविंग एंड केयरिंग थी। और मेरे हम्म बच्चों को अच्छी तरह फैमिली रन की और अच्छी तरह बच्चों को बड़ा किया। हम्म ये 3 चीजें लिखी मैंने। एक दो एंड वर्क 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 में अच्छा आपकी फैमिली आ गई, वो बच्चे आ गए, ठीक है, परफेक्ट है। और वर्क में मैं जैसे बैंक में थी तो, और मतलब वीआरएस लिया काफी टाइम हो गया, तो वो मेरे माइंड में मतलब ये फैमिली स्टिल के लिए मैंने लिख दिया ना। हम्म ठीक है, एफिशिएंट वर्ब एफिशिएंट है, यस, ठीक लविंग है, एंड केयरिंग। यस यस। परफेक्ट। रोहित जी, डू यू वांट टू शेयर क्विक शेयरिंग? आप अपना फ्यूनरल आप अपना इमेजिन कर सकते हैं खुद का 3 साल बाद? क्या हुआ? नहीं नहीं मैं देख रहा हूँ मैम एक्चुअली आर कैन यू हियर मी यस वी कैन हियर यू। ओके 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 हाँ एक्चुअली आई हैव जस्ट रिसेंटली जॉइंड इट वी नो अभी इट, वी नो, वी या नो, फर्स्ट क्लास। वेलकम। या थैंक यू जो भी है मेरे को तो जैसे कि अभी मेरे को एग्जैक्टली आप जो फैमिली वाला बता रहे हैं तो ये अभी मैं नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ लेकिन टू तो बिगिन आपको विद द एंड विजुअलाइज करना है कि 3 साल बाद आप खुद के फ्यूनरल में हो
और हाँ आप अपने फ्यूनरल में आपकी फैमिली आपके लिए क्या बोल रही है, आपके फ्यूनरल में आपके लिए, हाँ आपके फ्रेंड्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं आपके फ्यूनरल में, रोहित कैसा था, उसके क्या अचीवमेंट्स थे, उसके बारे में सबसे ज्यादा चीज क्या याद आएगी, उसने क्या कंट्रीब्यूट किया। और ओके। तीसरा, वर्क प्लेस में जितने लोग हैं वो आपके बारे में क्या बोलेंगे, हाँ 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 हाँ, तो ये मोस्ट आपको विजुअलाइज करना है। इसको मतलब एंटिसिपेट करना है कि व्हाट एग्जैक्टली दे विल बी थिंकिंग अबाउट मी। व्हाट विल दे से एट योर फ्यूनरल, यस। हाँ 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 हाँ, तो मेरे को तो लगता है कि जो भी मेरा अभी मतलब वर्किंग है उसके हिसाब से तो 80% चीजें तो पॉजिटिव ही बोलेंगे फ्यूनरल में और फ्यूनरल के बाद भी। आप तो ये बताओ क्या बोलेंगे, कि नहीं नहीं, रोहित हार्ड वर्किंग था या रोहित क्या था, वो बताओ आप तो। हाँ हाँ, डेफिनेटली वो ये बोलेंगे कि रोहित जो है बहुत हार्ड वर्किंग था, रोहित लेकिन जो है बेवकूफ था, बहुत सीधा था। और हाँ हाँ हाँ, तो ये जरूर बोलेंगे, What लेकिन वो character, बोलेंगे कि है। what character would you like them to have seen in you? बट नहीं नहीं, वो ठीक है मैम, जो भी उन्होंने देखा है, क्योंकि रोहित एक अलग प्लेटफॉर्म पे है, और 80% से ज्यादा वही मैंने आपको बताया कि 80-20 आपकी अगर कर ले फैमिली क्या तो 80 कहेगी आपके बारे में, है। आपकी फैमिली क्या कहेगी आपके बारे में आपके फ्यूनरल पे? अब फ्यूनरल पे तो यही बोलेगी कि मतलब जो है मतलब जो भी हुआ है इट्स नॉट, मतलब नहीं होना चाहिए था, ये तो खैर नहीं सभी नहीं के नहीं साथ नहीं होना है। नहीं 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 नहीं, सो और एंड दे विल थिंक अबाउट मी पॉजिटिव, जो भी वो बोलेंगे वो पॉजिटिव बोलेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे अपन यहाँ पर। हाँ What character would you like them to have seen in you? So आप अपना क्रिएट कर रहे हो, what kind of son or daughter or cousin were you, what kind of friend you were, what kind of working associate were you, what would you like each of these speakers to say about you and your life? आप क्या चाहोगे वो आपके बारे में क्या बोले? हाँ, ठीक है मैम, जो मैं What चाहता would हूँ be वो seen यही in the mind? बोलेंगे कि मतलब ही इज अ जेनरस पर्सन, ही इज अ हाँ। काइंड हार्टेड पर्सन, हम्म। एंड मतलब वो उसको जो है वो सामने कुछ भी काम है तो सामने वाले का जरूर उसको जो है वो रख करके हर तब बात फिर है, वो अपना काम करेगा। समथिंग he's लाइक दैट ही। compassionate, हाँ, तो मतलब ही compassionate, क्या चीज helpful, में, helpful and compassionate. या हेल्पफुल एंड कंपैशनेट, वो अपना नुकसान कर लेगा लेकिन सामने वाले का नुकसान नहीं होने देगा। एंड ही इज अ वर्ड ऑफ मैन Very कि मतलब loving. हाँ Rohit मतलब was a very loving friend and a dear, very हाँ loving person. हाँ, लविंग है, बट लेकिन मेरे को मतलब वैसे कोई फ्रेंडशिप वगैरह या उस तरह का सर्कल मेरा नहीं है, तो डेफिनेटली उन लोगों को थोड़ा सा रहता है कि भाई इसका फ्रेंड सर्कल वगैरह कम है, तो वही वो भी हो सकता है उस पॉइंट पे जो है वो नेगेटिव बोल रहे हैं, तो उसके लिए पॉजिटिव बोलने के लिए तो मेरे को अपना ये सर्कल और बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट और होना पड़ेगा मैनिफेस्टेशन से। ठीक है, बढ़िया है. Let's हाँ move ahead. What it means to begin with the end in the mind. या Habit number 2 develop कर रहे हैं, which is begin with the end in the mind. या If you participated seriously in this visualization experience, you touched for a moment some of your deep fundamental values. You established brief contract with your inner guidance systems at the heart of your circle of influence. What it means to begin with the end in the mind. When I look upon the tombs of the great, every emotion of envy dies in me. When I read the epitaphs of the beautiful, every inordinate desire goes out. When I meet this grief of parents upon a tombstone, my heart melts with compassion. When I see the tomb of parents themselves, I consider the vanity of grieving for those whom we must quickly follow. When I see kings lying by those who depose them, when I consider rival wits placed side by side or holy men, I reflect with sorrow and astonishment on the little competitions, fractions and debates of mind. ये बोल रहा है जब फ्यूनरल में जाते हैं तो ये लड़ाई झगड़ा जेलिसी ये सब बहुत फालतू की चीजें लगती है. When I read the several dates of the tombs of several died yesterday, some 600 years ago, I consider that the great day when I shall of be yours contemporary make appearance together. ये बोल रहा है कि मैं फ्यूनरल पहले से सोच लेता हूँ कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरा फ्यूनरल कैसा होगा.
Although habit 2 applies to many different circumstances and levels of life, the most fundamental application of begin with the end in the mind is to begin today with the image, picture, or paradigm of the end of the life as your frame of reference or the criterion by which everything else is examined. Each part of your life, today's behavior, tomorrow's behavior, the next week's behavior, next month's behavior, can be examined in the context of the whole of what really matters most of you, most to you. अब इसमें ये बोल रहा है कि आप क्रिएट करो अपने दिमाग में कि आपके लिए एक्चुअली में आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए. गौरव के लिए क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में, सुनीता के लिए क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में, रोहित के लिए उसकी पर्सनल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, भावना के लिए उसकी लाइफ का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, रिचा के लिए उसकी पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, उसके लिए उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है. ईच पार्ट ऑफ योर लाइफ today's behavior by keeping the end clearly in mind, by keeping the end clearly in mind, you can make certain that whatever you do on any particular day does not violate the criteria you have defined as supremely important, and that each day of your life contributes in a meaningful way to the vision you have of your life as whole. ये बोल रहा है अपनी लाइफ का विजन अभी क्रिएट करो. Are you understanding? Is it communicating? Yes, yes. To begin with the end in the mind means to start with a clear understanding of your destination. It means to know where you are going so that you better understand where you are now, and so that the steps you take are always in the right direction. आपको अपनी लाइफ में गोल्स बनाने पड़ेंगे, आपको कनेक्ट होना पड़ेगा आपकी ड्रीम क्या है. What is it that you want to create out of your life? You have one life. What will you like if anything was possible to be created in your life? आपको क्या चाहिए लाइफ में? It's incredibly easy to get caught up in the activity trap or the busyness of life, to work harder and harder at climbing the ladder of success, only to discover it's leaning against the wrong wall. अपन जब पर्पस ऑफ लाइफ नहीं स्टैब्लिश करते तो अपन बस काम करते रहते हैं, बिजी रहते हैं लाइफ में, बस बिजी चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बिजी रहते हैं, पर अपन को पता नहीं होता अपन जहां कहाँ रहे हैं. It is possible to be busy, very busy, without being very effective. So effectiveness का busyness से कोई लेना देना नहीं है. आप बिजी हो सकते हो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा, but that doesn't mean you are effective. People often find themselves achieving victories that are empty, successes that have come at the expense of things they suddenly realize were far more valuable to them. मतलब आप वो काम कर रहे होगे at the expense of things that you actually wanted. People from every walk of life, doctors, academians, actors, politicians, business, athletes, plumbers, often struggle to achieve a higher income, more recognition of a certain degree of professional competence, only to find that their drive to achieve their goal blinded them to the things that really mattered most and now are gone. So ये बोल रहा है आप माइंड मैप बनाओ कि आपके लिए लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है. What is it that you really like to do? What is it that you really enjoy? What is it that you actually dream about? What will be your dream life like? Will be your dream profession be? What will be your dream relationships look like? How is your work and personal life balance looks like? Your dream. If you carefully consider what you wanted to be said of you in funeral experience, you will find your definition of success. इसमें ये नहीं कि वो क्या बोलेंगे, you have to see कि आपको आप चाहते क्या हो, लोग क्या बोले आपके बारे में. That is your actually definition of success. It may be very different from definition of
you thought you had in mind. Perhaps fame, achievement, money, or some of the other things we strive for are not even part of the right wall. When you begin with the end in the mind, you gain a different perspective. One man asked another on the death of a mutual friend, "How much did he leave?" His friend responded, "He left it all." Just एक मिनट. हाँ मम्मी, मीत नहीं आया अभी घर पे. All the things are created twice. So ये पूरा ये जो begin with the end in the mind है ना, ये पूरी visualizing technique है. And visualization भी वैसी है कि आप create करो आप क्या चाहते हो अपनी life. Begin with the end in the mind is based on the principle that all things are created twice. There is a mental and first creation and a physical, which is a second creation to all things. Take the construction of a home, for example. You create it in very detail before you even hamper first nail into the place. You try to get a very clear sense of what kind of house you want. If you want a family centered home, you plan to put a family room where it would be natural gathering place. You plan sliding doors, a patio for children to play outside. You work with ideas, you work with your mind until you get a clear image of what you want to build. Similarly, आप अपनी लाइफ क्रिएट करो, उसका ब्लूप्रिंट बनाओ. Then you reduce it to blueprint and develop construction plans. All of this is done before the earth is touched. If not, then in the second creation, the physical creation, you will have to make expensive changes that may double the cost of your home. तो बोल रहे हो अगर आप अपने दिमाग में विजुलाइज नहीं करोगे, क्लैरिटी नहीं लाओगे कि आपको क्या चाहिए, तो आप फिजिकल रेल्म में स्ट्रगल करते रहोगे. The carpenter's rule is measure twice, cut once. Yes, ask. कुछ बोल रहे हैं रोहित जी आप? नहीं मैम, नथिंग. वो मेरे को लग रहा है कि वो अनम्यूट हो गया है क्या? हाँ, आप म्यूट कर लीजिए. The carpenter rule is measure twice, cut once. What does that mean? You have to make sure that the blueprint, which is the first creation, is really what you want. That you have thought everything through. Then you put it into bricks and mortar. Each day you go to the construction shed and pull out the blueprint to get the marching orders for the day. You begin with the end in the mind. For another example, look at a business. If you want to have a successful enterprise, you clearly define what you're trying to accomplish. You carefully think through the product or service you want to provide in terms of your market target. Then you organize all the elements, the financial, the research and development, operations, marketing, personal, physical facilities, and so on to meet that objective. The extent to which you begin with the end in the mind often determines whether or not you are able to create a successful enterprise. Most businesses' failures begin in the first creation with the problems such as undercapitalization, misunderstanding of the market, and lack of business plan. The same is true with parenting. If you want to raise responsible, self-disciplined children, you have to keep that end clearly in your mind as you interact with your children on the daily basis. You can't behave towards them in a ways that undermine their self-discipline or self-esteem. आपका जो डेली बिहेवियर आएगा ना, वो आपके विजुअलाइजेशन से आएगा, वो आपकी क्लैरिटी से आएगा कि आपको किस तरह का क्या चाहिए.
To varying degrees, people use this principle in many different areas of life. Before you go on a trip, you determine your destination and plan out the best route. Before you plant a garden, you plan it out in your mind, possibly on paper. You create speeches on the paper before you give them. You envision the landscaping in your yard before you landscape it. You design the clothes you make before you thread the needle. To the extent to which we understand the principle of two creation, accept the responsibility for the both, we act within and enlarge the borders of our circle of influence. Circle of influence is what we can control, right? If we know what we want from our life, if we know our purpose of life, if we can visualize and see in our mind what I want my life to look like in coming 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, I will act accordingly. If I know I'm going to be a billionaire and I will have a house and servants and this and that, then I will start acting like that from now on. If I have a team of 100 people in coming 1 year, I will get up at 4 a.m. and will do all the autopilot. To the extent to which we do not operate in harmony with this principle and do not take charge of our first creation, we diminish it by design or default. It's a principle that all things are created twice. It's a principle, it's a law of nature. But not all first creations are conscious design. हो सकता है आप कॉन्शियसली नहीं डिजाइन कर रहे, पर आप डिजाइन तो कर रहे हो. In our personal lives, if we do not develop our own self awareness and do not become responsible for our first creations, we empower other people and circumstances outside our circle of influence to shape much of our lives by default. We reactively live the scripts handed to us by family, associates, other people, agendas, pressure of circumstances, societal demands, expectations, etc. Scripts from earlier years, from our training and our conditioning. अगर आप अपना विजन बोर्ड नहीं बनाओगे क्लियरली, देन आप बाय डिफॉल्ट दूसरों के विजन बोर्ड को हेल्प करोगे और आपकी खुद की लाइफ में आप अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी पाओगे. सो आपको अपना एंड खुद को दिमाग में क्रिएट करना है, विजन बोर्ड क्रिएट करना है. These scripts come from people, not principles. They rise out of our deep vulnerabilities, our deep dependencies on others, and our needs for acceptance and love, for belonging, for sense of importance and worth, for a feeling that we matter. जो ये कंडीशनिंग की स्क्रिप्ट्स होती है ना, अच्छा जो चल रहा है चलने दो, अपन क्रिएशन खुद के दिमाग में कुछ इच्छा करने से भी डरता है, कुछ विजन बनाने से भी डरता है, क्योंकि अपन को लगता है यार मेरी वाइफ को पसंद नहीं आएगा, मेरी फैमिली अप्रूव नहीं करेगी, अरे मेरे को फैमिली टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. अभी जब से मैं बुक रीडिंग कर रही हूँ, राइट, सो दिस इज समथिंग आई हैव क्रिएटेड, आई डिक्लेयर्ड and I created, I love book reading and I will do book reading. Even on Saturday night 7 to 8 I will do book reading, right? My family may be waiting for me downstairs or तो मैं वो sacrifice कर रही हूँ, पर मैंने विजन क्रिएट कर लिया कि बुक रीडिंग रोज हो रही है 7 से 8, तो वो मैंने विजन क्रिएट किया है एंड आई एम एक्टिंग अकॉर्डिंगली. सो अदर पीपल एंड सर्कमस्टेंसेस आर नॉट रनिंग मी. अब 7 से 8 मेरे घर में कुछ भी हो रहा हो, नो मैटर व्हाट, आई एम हियर रीडिंग द बुक. माय कमिटमेंट इज क्लियर बिकॉज माय विजन इज क्लियर. वरना ऐसा थोड़ी है हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है. मेरी डिमांड अभी भी है नीचे, कभी मेरी सास बीमार पड़ जाती है, कभी किसी चीज और में जरूरत होती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो आई कैन बी एनीवेयर इफ आई एम नॉट क्रिएटिंग व्हाट आई वांट, बिकॉज इमरजेंसी सबकी लाइफ में आती है, अर्जेंसीज हर जने की लाइफ में आती है, बट यू कैन नॉट लिव योर लाइफ वेटिंग फॉर अर्जेंसीज टू कम एंड इमरजेंसीज टू कम. यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट इन योर माइंड व्हाट यू वांट, फिर बाकी सब इमरजेंसीज अपने आप टेक केयर हो जाएंगी. Whether we are aware of it or not, whether we are in control of it or not, there is a first creation to every part of our lives. We are either the second creation of our own proactive design, or we are the second creation of other people's agendas, of circumstances, of past habits.
अगर आप अपनी लाइफ नहीं क्रिएट करोगे तो दूसरा जना आपकी लाइफ क्रिएट करेगा. The human capacities of self awareness, imagination, and consciousness enable us to examine first creations and make it possible for us to take charge of our own first creation. Screen visible है क्या? Yes, yes, The it is. unique Yes, unique well, yeah unique capacity of self awareness, imagination, and consciousness enable us to examine our first creation and make it possible for us to take charge of our own first creation, to write our own script. You are the creator, you have to write your own script. Put another way, habit 1 says you are the creator. Habit 2 says habit 2 is the first creation. सो हैबिट 1 बोल रही है आप क्रिएटर हो अपनी लाइफ के. आप क्रिएटर हो अपनी लाइफ के, हैबिट 1 बोल रही है. सो आप क्रिएटर हो तो आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करो, क्योंकि दैट्स द ओनली प्लेस वेयर यू विल बी एबल टू क्रिएट समथिंग. सो आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जो चीजें आपके कंट्रोल में, उन पे फोकस करो एंड डोंट फोकस ऑन द सर्कल ऑफ कंसर्न. हैबिट 2 इज सेइंग कि जो आपकी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें आप क्रिएट करो कि आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए. Leadership and management, the two creations. Habit 2 is based on the principles of personal leadership, which means that the leadership is the first creation. Leadership is not management. Management is a second creation. सबसे पहले लीडरशिप आती है. लीडरशिप का मतलब ही विजन होता है. मैनेजमेंट तो सेकंड क्रिएशन होता है, which we will discuss in the chapter habit number 3. But leadership has to come first. Management is the bottom line focus. How can I best accomplish certain things? Leadership deals with the top line. What are the things I want to accomplish? In the words of both Peter Drucker and Warren Barnes, management is doing things right. Leadership is doing the right things. Management is efficiency in climbing the ladder of success. Leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall. आपको क्या चाहिए वो आपको क्लियर होना चाहिए. कहीं आप गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो. आपको जाना दिल्ली है, आपने ट्रेन चेन्नई की पकड़ ली तो उससे काम नहीं होगा, आप दिल्ली नहीं पहुंचोगे. You can quickly grasp the important difference between the two in the next example. Imagine yourself that आप जंगल में हो और आप पेड़ काटने जा रहे हो. They are the producers, the problem solvers. They are cutting through the undergrowth and clearing it out. The managers are behind them, sharpening their machetes, writing policy and procedures manual, holding muscle development programs, and bringing in improved technologies and setting up working schedules and compensation programs to the machete welders. The leader is the one who climbs the tallest tree and yells, "Wrong jungle." But how managers respond? "Shut up, we are making progress." Does this make sense? जो लीडर होता है वो सबसे आगे चलता है, वो सबसे टॉलेस्ट ट्री चढ़ के बोलता है, अरे गलत ट्री पे चढ़ गई तो यहीं पे तो पहुंचना ही था, तो गलत डायरेक्शन है. मैनेजर्स बोलते हैं चुप रहो, अपन चढ़ तो रहे हैं एटलीस्ट. तो मैनेजर्स को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता. इट्स अ लीडर्स जॉब, इट्स अ विजन जॉब टू सी कि अपन जहां जा रहे हैं वो सही है नहीं है. सो यू हैव टू चूज वेयर यू वांट टू प्रोग्रेस इन लाइफ, इन पर्सनली, प्रोफेशनली, हेल्थ में, वेल्थ में, चिल्ड्रन में, सोशली. What is it that you want to create?
As individuals, groups, and businesses, we are often so busy cutting through the undergrowth, we don't realize we are in the wrong jungle. The rapidly changing environment in which we live makes effective leadership more critical than it has ever been in every aspect of independent and interdependent life. आजकल सब भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, वो कर रहा है तो मैं भी कर लूं, ये कर रहा है तो मैं भी कर लूं. आपको ये पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या अपनी लाइफ में. We are more in need of a vision or destination and a compass, a set of principles and directions, and less in need of a roadmap. Google Maps सबके पास है, पहुंचना कहाँ है ये पता होना चाहिए. We often don't know what the terrain ahead will be like or what we'll need to go through. Much will depend on our judgment at the time, but the inner compass will always give us direction. Effectiveness, often even survival, does not depend solely on how much effort we expend, but on whether or not the effort was expended in the right jungle. आप कितनी मेहनत कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है. आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो क्या, वो इंपॉर्टेंट है. And the metamorphosis taking place is in most industry and profession demands leadership first, management second. आपका डायरेक्शन चूज करना बहुत बड़ी चीज है और वो विजन से आएगा. In business, the market is changing so rapidly that many products and services that successfully met customer taste needs a few years are obsolete today. Proactive, powerful leadership must constantly monitor environmental change, particularly customer buying habits and motives, and provide the force necessary to organize resources in the right direction. Such changes are as deregulation of the airline industry, skyrocketing cost of healthcare, and the greater quality and quantity of imported cars impact the environment in significant ways. If industry do not monitor the environment, including their own work teams, and exercise the creative leadership to keep headed in the right direction, no amount of management expertise keep them from failing. इसका मतलब ये है जब तक आपको पता नहीं एनवायरनमेंट कहाँ जा रहा है, ट्रेंड क्या है, आप कनेक्टेड नहीं हो कि किस डायरेक्शन में जाना है, आप कितनी मेहनत कर लो आप फेल ही होगे. So it's not about being hardworking, it's about what you want, your vision. That's more important than working hard. Efficient management without effective leadership is, one individual has phrased it, like straightening deck chairs on the Titanic. No management success can compensate for failure in leadership. But leadership is hard because we are often caught in management paradigm. अपन इतने बिजी होते हैं काम को सल्टाने में दैट कि अपन विजन ही नहीं देख पाते. और ये बुक कह रही है विजन इज मोर इम्पोर्टेंट, लीडरशिप इज मोर इम्पोर्टेंट देन मैनेजमेंट. ऋचा, बहुत सिंपल साइंस है जो राहुल सर अपने को बोलते हैं कि अपने ऑपरेशंस से बाहर निकलेंगे तब तो अपने ग्रोथ एंड लीडरशिप एंड विजन में जा डायरेक्शन पाओगे. का सोच पाएंगे. हाँ, आप अपने मैनेजमेंट में इतना बिजी रहते हैं कि अपने विजन ही भूल जाते हैं. यही बात है. ये भी अभी जब नेक्स्ट पैराग्राफ है ना इसमें ये हो रहा है कि एग्जीक्यूटिव आता है और बोलता है आई वाज डीप इनटू मैनेजमेंट, buried in pressing challenges and details day-to-day logistics. So I decided to withdraw from management. I could राइट. get other people to do that. I wanted to really lead my organization. It was hard. I went through the withdrawal pains because I stopped dealing with a lot of pressing urgent matters that were right in front of me and which gave me sense of immediate accomplishment. आप जब मैनेजमेंट करोगे ना तो आपका एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने काम कर लिया जी, मैंने आज ये काम सुलटा लिया जी, पर वो आपको लाइफ में कहीं आगे नहीं लेके जाएगा. I didn't receive much satisfaction as I started wrestling with the direction issues, the cultural building issues, the deep analysis of problems, the seizing of new opportunities. Others also went through the withdrawal pains from their working style comfort zone.
They miss the easy accessibility I had given them before. तो ऑफ कोर्स अगर आप जॉब बॉस हो और अगर आप ऑफिस नहीं जाओगे तो दूसरा आपको मिस करेगा, पर उनको आदत पड़ जाएगी फिर धीरे धीरे. But I persisted. I was absolutely convinced that I needed to provide leadership. And I did. Today, our whole business is different. We are more in line with our environment. We had doubled our revenues and quadrupled our profits. I am into leadership. I'm convinced that too often parents are also trapped in management paradigm, thinking of control, efficiency, rules, instead of direction, purpose, and family feeling. And leadership is even more lacking in personal lives. We are into managing with efficiency, setting and achieving goals before we have even clarified our values. So, to become a leader, it's very important to clarify your values. Rescripting, becoming your first creator. The two additional unique human endowments that enable us to expand our proactivity and to exercise personal leadership in our lives are first, imagination and consciousness. Imagination. Through imagination, we can visualize the uncreated worlds of potential that lie within us. आपको वो दुनिया इमेजिन करनी है जो आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते. Conscious is we can come in contact with universal laws and principles with our own singular talents. आप अपने टैलेंट्स को समझो, खुद की नीड्स को समझो, खुद की डिजायर्स को समझो, कॉन्शियस हो खुद की लाइकिंग से कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद, व्हाट एम आई पैशनेट अबाउट. और अपने पैशन को इमेजिनेशन से जोड़कर विजुलाइज करो, ड्रीम देखो कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्रिएट करना है. Combined with self-awareness, these two endowments empower us to write our own script. अगर आप कॉन्शियस हो जाओगे अपने पैशन को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर, और उसको विजुलाइज करोगे कि आपको क्या चाहिए, तो आप सेल्फ अवेयरनेस के साथ अपनी लाइफ को रीस्क्रिप्ट कर सकते हो. Because we already live with so many scripts that have been handed to us, process of writing our own script is actually more process of re-scripting, paradigm shifting, or changing some of the basic paradigms we already have. As we recognize the ineffective scripts, the incorrect or incomplete paradigm within us, we can proactively begin to re-script ourselves. अभी तक अपन जो लाइफ जी रहे हैं ना, रोज ऑफिस जाना है 10 बजे, फिर 6 बजे आ जाना है, फिर फैमिली के साथ 1 घंटा स्पेंड करना है, फिर बच्चों के साथ एक घंटा स्पेंड करना है, फिर सो जाना है. ये पहले से स्क्रिप्टेड है लाइफ. इसमें आप खुद कुछ नहीं कर रहे, इसमें आपकी खुद की कोई लीडरशिप नहीं है. As we recognize the ineffective scripts, the incorrect and incomplete paradigm within us, we can begin to re-script our lives. अब अपन को एक्चुअली में शांति से बैठकर सोचना पड़ेगा कि what is it that I want to create in my life. मेरी ड्रीम लाइफ कैसी होनी चाहिए, मुझे कहाँ ट्रैवल करना है, मुझे क्या करना पसंद है, मुझे क्या चाहिए मेरी लाइफ में. I think one of the most inspiring accounts of the rescripting programs comes from autobiography of Anwar Sadat, past president of Egypt. Sadat had been reared, nurtured, and deeply scripted in hatred for Israel. He would make the statement on the national television, I will never shake the hands of Israeli as long as they occupy 1 inch of Arab soil. Never, never, never. And the whole country will say never, never, never. He marshaled the energy and unified the will of the whole country in the script. The script was very independent and nationalistic, and it aroused deep emotions in the people. But it was very foolish, and Sadat knew it. It ignored the perilous, highly interdependent realities of the situation. So he re-scripted himself. It was the process he had learned when he was young, imprisoned in cell 54. He learned to withdraw from his own mind and look at it to see the scripts were appropriate and wise. He learned how to wicked his own mind through a deep process of meditation,
to work with his own scriptures and from prayers re-script himself. आपको खुद की reprogramming करनी पड़ेगी. खुद से 100 बार पूछना पड़ेगा मुझे क्या चाहिए लाइफ में, what is it that I want to create, what is it that I want to create. You need to create your vision board. He records that he was almost loath to leave his prison cell because it was there he realized that the real success is success with self. It's not in having things, but in having mastery, having victory over self. He rescripted towards Israel. He visited Knesset in Judaism and opened up one of the most president-breaking peace movements in the history of the world. Sadat was able to use his self-awareness, his imagination, and his conscience to exercise personal leadership, to change an essential paradigm, to change the way he saw the situation. He worked at the center of circle of influence, and from re-scripting, change in paradigm followed changes in behavior, attitude, and affected millions of people and lives in the wider circle of concern. आप जब सेल्फ अवेयर होगे तो आपको इनफेक्टिव स्क्रिप्ट्स दिखेगी जो आपने बिलीफ सिस्टम अपने दिमाग में डाल रखा है बहुत सारा, जो अनवर्दी ऑफ अस है and totally incongruent with what value in your life. So habit 2 says we don't have to live with those scripts. We are responsible to use our imagination and creativity to write new ones that are more effective, more congruent with our deepest values and desires, with the correct principles that give values meaning. Suppose, for example, that I'm highly overreactive to my children. Suppose that whenever they begin to do something I feel inappropriate, I sense an immediate tensing in pit of my stomach. I feel defensive. जब मेरा बच्चा कुछ भी करता है तो मेरे को डिफेंसिव फील होता है and I prepare for battle. My focus is not long-term growth and understanding, but a short-term behavior. I'm trying to win the battle, not the war. तो ये बोल रहा है लॉन्ग टर्म विजन बनाओ अपना. आई थिंक आई विल ये पेंटिंग शुरू में इसलिए दिखाया था कि बोल रहा है कि आपकी लाइफ खाली कैनवास है and it's your choice what you want to create. We will continue tomorrow and we will create a personal mission statement tomorrow. Create what, Richa? Personal mission statement. Okay. Tomorrow. Okay. मतलब उनको विजन क्रिएट करना है खुद के लिए. मेरी ये वैल्यूज है, मेरे को इन सब चीजों से फर्क पड़ता है. दिस इज व्हाट आई रियली केयर अबाउट एंड दिस इज व्हाट आई रियली वांट माय लाइफ टू बी अबाउट. तो ये अपन कल क्रिएट करेंगे. बहुत बड़ा चैप्टर है भाई ये. ठीक है. ओके. मैं इसके ऊपर काम करके आऊंगी जिससे मैं छोटे में समझा पाऊं. यस रिचा. Okay, perfect. See you tomorrow. Thank you, Richa. Any questions, anything before we end today? Not for me. Sunita ji, Rohit ji. No question. Can you It hear was me? clear, right? Yes. Yeah. No question. The session is very nice. Book reading is very nice. और बहुत अच्छा लगा. काफी insights मिले एकदम. ये लग रहा है कि हम लोग जो भी कर रहे हैं वी आर डूइंग इट इन द राइट डायरेक्शन. इस बुक रीडिंग से ये भी हो रहा है कि जो भी हम लोग पिछले 9 महीने से कर रहे हैं फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स वी आर रिक्रिएटिंग आवरसेल्फ. Yes, perfect. Very beautifully stated. Yeah, and it's really nice. Sorry I could not join it earlier because I'm just at the airport. So, no issues. There are recordings. You can listen to the recordings. Yeah, definitely. Perfect. See you tomorrow. कल अपन है ना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाएंगे खुद की लाइफ के लिए. Sure. Perfect. सुनीता जी आपको कुछ बोलना है? नहीं, जो आपने बताया ना फ्यूनरल का, तो समझो मेरा किसी के हमारी फैमिली बड़ी है, कुछ कोल्ड वॉर था चल रहा है, तो ऐसे लगा नहीं बाबा क्लियर करना है. ऐसे मतलब ऐसे फ्यूनरल का सोच के ऐसे नहीं सब ठीक करना है, मतलब ऐसे. परफेक्ट. वेरी ब्यूटीफुली. सो आप क्रिएट करो सुनीता जी आपकी लाइफ में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है.
कल अपन पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाएंगे. यस ठीक है. What you want your life to be about? यस Okay, perfect. See you tomorrow. Okay, okay.